Good morning, dear students. Last time I told you about the inserting a text box. Today I will tell you how to insert a checkbox, radio button, or the password box in the form. Firstly, you should have to clear what is the checkbox. A checkbox is a box which is used to select the values. Means more than one boxes will be given to you, and you have to select the values. Means you have to make it check or uncheck. For example, in the form it is given describe your hobbies, and hobbies are given hockey, cricket, and football, like this one. And whatever your hobbies are there, you have to check them. Means box will come to you and you have to click on that box, and one check box, one checked mark will be there. Here, have a look. Graduate, postgraduate. In front of these, one box is given and it is checked. So this box is came with the help of the checkbox. And how it will come? With the help of input tag. You can see input type equal checkbox, and name is given hobbies, and for this program is given here, and I will write the same program in the computer also, and you will see the output of that program. Firstly, I am telling you, after body tag, form tag is started, and paragraph, choose your qualification, and after that input type equal checkbox. I told you that input tag is used to create the input control, and lastly we make the text box. Now we are making the checkbox, and input type equal checkbox, name equal C1. As I told you that every input control is having a name and value also. So name is C1 and its value is graduate. After that, checked. Checked is the one attribute of the input tag. If you are giving the checked, by default that checkbox will come in the checked position. After that, graduate means in front of the checkbox, graduate will become in the written form. Similarly, in the second input type equal checkbox, name equals C2, means two checkbox are here. First name is C1 and the second one name is C2, and first value is graduate and the second one is postgraduate, and I am showing you its form. You can see choose your qualification, graduate, postgraduate, and graduate is pre-selected because we gave its value as a checked, and whenever we are giving checked, that text box, that checked box will come into the checked position. After that, inserting a radio button. What is the difference between the checkbox and the radio button? Checkbox come in the square shape while the radio button come in the circle, and checkbox is used to select one or more than one values. Means you can choose more than one values also by using the checkbox, but in the radio button we can choose one value out of the many values, and the radio button comes in the circle form. For example, two values are given to you,
select a gender, after that male and female, and you have to select one of them naturally, and in that case we will use the radio button. Showing you the form of this one. You can see here, specify the gender, male, female. Female is selected, and I am showing you the program. See its program. After the body tag, form is started, and in the paragraph specify your gender, input type equal radio. For making a radio button, you have to define the type radio, and this radio button name is gender and value is male, and after that radio button will be came to you, and in front of that male text will be written. Two breaks are used, means it will insert the two line break, and input type equal radio. Second radio button will come to you, and its value is female, and by default it is checked. You can see in the form the female is coming in the checked position. Thirdly, password field. You can see form is shown here, and it is enter your username and enter password. So you can insert a username by using the text box, but whenever you want to insert the password box, what is the difference between the text box and the password box? In the text box, whenever you will write any text, it will come in the form of the text, while whenever you are typing anything in the password box, it will come in the form of the stars or invisible form. You can see its program is written here. What is difference? Enter password, input type equal password. We have defined here type equal password, and its size is 20. And when we will type in this box something, it will be in the form of the dots or stars. Okay students, now I am telling you in the Hindi. पिछली बार मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना बताया था फॉर्म के अंदर, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न में दे सकते हैं। आज आपको मैं बता रहा हूँ चेक बॉक्स के बारे में। चेक बॉक्स का काम क्या होता है? एक स्क्वायर बॉक्स दिया होता है और उसके आगे कुछ भी लिखा रहता है, जैसे कि आप अपनी चॉइस बताएं, मीन्स अपनी हॉबी बताएं। उसके नीचे 5-6 हॉबीज़ दी हुई हैं, और आप उनमें से 1, 2, 3 कितनी भी हॉबी सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल एट्सेट्रा, और उनके आगे बॉक्सेस बने हुए हैं, और आप उन बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक टिक का निशान आता है। तो वो जो टिक के निशान आते हैं वो जिस बॉक्स के अंदर आते हैं वो बॉक्स आपके चेक बॉक्स कहलाते हैं। और चेक बॉक्स लाने के लिए इनपुट टैग का ही प्रयोग होगा, और इनपुट टैग के अंदर आपको टाइप इक्वल चेक बॉक्स देना होगा। नेक्स्ट वन, रेडियो बटन। रेडियो बटन का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको सिर्फ एक ही वैल्यू सिलेक्ट करनी है। कई वैल्यू दी हुई है, उनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू सिलेक्ट करनी है। जैसे कि जेंडर देना होता है हमें, तो जेंडर के लिए मेल भी दिया होता है और फीमेल भी। तो 2 बटन आपके पास सर्कल की फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन आप उन दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने टाइप में रेडियो बटन दे दिया है तो एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी और वो सर्कल की फॉर्म में आएगा। और ये रेडियो बटन भी आपके इनपुट टैग से ही बनते हैं। थर्डली, पासवर्ड बॉक्स। पासवर्ड बॉक्स, जैसे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तो हम देखते हैं कि जब पासवर्ड देते हैं तो वो स्टार की फॉर्म में आता है। तो अगर आप एक
पासवर्ड बॉक्स लाना चाहते हैं अपने फॉर्म के अंदर, तो आप इनपुट टैग के द्वारा ही टाइप इक्वल पासवर्ड लिख देंगे, जिससे कि आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में ही आ जाएगा। लेकिन जब आप उसमें कोई वैल्यू देंगे तो वो आपको स्टार्स की फॉर्म में दिखाई देगी। सो डियर स्टूडेंट्स, if you face any kind of the problem, you can discuss with me. Thank you.